हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। First question is, the universe is very old, almost. Second question, which theory attempt to explain to us the origin of universe? And third question is, the study of history of life form on earth. And fourth question, stellar distance are measured in. Universe is very old, almost 20 billion years. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया बिग बैंग थ्योरी ने। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ को कहा जाता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। स्टेलर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। क्वेश्चन सेकंड, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ। क्वेश्चन थर्ड, द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एन एग्जांपल ऑफ which can be used as industrial pollution indicators. Homo erectus had a large brain around 900 cc and probably ate meat. True or false? Who with a brain size of 1400 cc live in Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. Homo sapien arose in which place and moved across continent and developed into distinct races? About 200 Maya, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. True or false? Next question is, Dryopithecus and Ramapithecus were exist about 2 Maya. Which man ancestor probably lived in East African grasslands? Fourth question is, Homo habilis has the brain capacities about.